Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 23rd March 2023. So today is World Meteorological Day, that is 23rd March. So हमने कल भी किया था 22nd March World Water Day and 23rd March World Meteorological Day. Okay, and today is the day also when Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev they attend martyrdom. So let's start with the news. The first is COVID-19 pandemic is far from over, warns the Prime Minister. So currently our country is witnessing two rising infection. One is because of the influenza virus H3N2 and the second is because of XBB.1.16 which is a variant of Omicron. Okay, so the COVID-19 pandemic is far from over, emphasizing the need to monitor the status of the disease across the country on a regular basis. Okay, so यहाँ पे जो फोकस है जो जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है टू इंक्रीज होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ कोविड पॉजिटिव सैंपल्स यूजिंग द इंसागोग लैबोरेटरीज फॉर ट्रैकिंग एंड ऑल्सो एनी न्यू एंड एमर्जिंग वेरिएंट्स एंड फैसिलिटेट अ टाइमली रेस्पॉन्स. So the review comes against the backdrop of spike in influenza cases and rise in COVID cases over the past 2 weeks. So today is also Martyrdom Day, as you can see over here. So tributes to the heroes of our nation, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, they were hanged on March 23rd. Okay, so that is celebrated as the Martyrdom Day. अब हम आते हैं एडिटोरियल की तरफ. तो द फर्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द डेथ पेनाल्टी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा लेंथ में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज अ इम्पोर्टेंट इशू विच इज गोइंग ऑन करेंटली. बिकॉज करेंटली एक पेटिशन आया है सुप्रीम कोर्ट में जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था. विच सीक्स दैट द हैंगिंग by neck till the person is dead, that for death penalty should be abolished and there should be some other way for giving death penalty to the person. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि there are certain important cases which have been discussed over here. So you see there are two leading judgments on the issue. First is Bachan Singh versus State of Punjab 1980. Now this case is very important because it upheld the death penalty but limited it to the rarest of rare cases. तो जो नॉर्मली आप डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड ये पढ़ेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ये जो डॉक्ट्रिन दिया गया था फॉर डेथ पेनाल्टी इट वाज गिवन अंडर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सेकंड इज दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1983. सो इट अपहेल्ड द मेथड by ruling that hanging is as painless as possible and causes no greater pain than any other known method. तो यहाँ पे hanging for giving the executing death sentences was upheld. Then there was a 35th report of the Law Commission which came in 1967. So this report is also very important that it reported that electrocution जो electricity pass करके death sentence देते हैं, use of gas chamber or lethal injections were considered by some to be less painful. It was not in a position to come to a conclusion. It refrained from recommending any change. The next is IPCC का एक रिपोर्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. IPCC दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. तो उनका एक सिक्स्थ सिंथेसिस रिपोर्ट है विच इज द पार्ट ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट साइकिल. तो यहाँ के कुछ फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि IPCC का ये क्या कौन सा रिपोर्ट है. इट इज अ सिंथेसिस रिपोर्ट. सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है. सिंथेसिस रिपोर्ट किसका पार्ट है ये? इट इज अ पार्ट ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट साइकिल. तो 1990 से IPCC है. इट इज पब्लिसाइजिंग इट्स कंपाइलेशन ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च विच लिंक्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट. ओके, सो दिस इज द जिस्ट ऑफ व्हाट IPCC डज. तो एक ये साइंटिफिक बॉडी है और ये लिंक करती है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हाउ ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. सो जो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं अभी जो सिक्स असेसमेंट साइकिल चल रहा है, तो जो वेरियस असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं IPCC का, सो दे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाईलाइटिंग द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें सिक्स असेसमेंट साइकिल जो है, तो इट इज डिस्कसिंग अबाउट द नीड टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस विच वॉज एग्रीड इन 2015 पेरिस एग्रीमेंट. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो लेटेस्ट सिंथेसिस रिपोर्ट है ये कहता है कि दैट प्लैनेट्स बेस्ट चांस टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस इज टू एंश्योर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर reduced to 48% of 2019 levels by 2030. मतलब फास्टर रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. कैन यू सी दैट अगर हम 2019 लेवल्स में जो हैं
जो अगर मान लो कि हम यहाँ पे 100 यूनिट अगर हम एमिट कर रहे हैं, तो बाय 2030 इट शुड बी reduced टू 48, मतलब इट शुड बी नाउ 48 यूनिट्स, मतलब रिडक्शन बाय मोर देन 50%. Okay, and 99% by 2050. It means that all countries should reach net zero carbon neutrality by 2050. Why? To keep the global rise in temperature limited to 1.5 degrees Celsius. ठीक है, so there is a need for faster reduction in greenhouse gas emission. Now if the report says that अगर जो current policies हैं, जो कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है एट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और एट COP26 एंड 27, अगर हम उसके हिसाब से चलें, देन देयर विल बी अ राइज ऑफ 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 3.2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100. मींस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी द टेम्परेचर विल राइज बाय 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 3.2 डिग्री सेल्सियस. फाइन. अब अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी होंगे, जैसे कि हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था. For example, there are some fragile ecosystems like glaciers, then coastal ecosystem, island nations. These are the areas which are going to significantly suffer because of global rise of temperature, because there will be a sea level rise. So it will definitely make this area too much vulnerable. Okay. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रिपोर्ट है यहाँ पे कहता है कि that Paris Agreement targets cannot be met without negative emissions or carbon dioxide removal and would entail untested technologies that now appear to be impractically expensive. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डीप कट एमिशंस के लिए एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज का जो है वो ज़रूरत पड़ जाएगा यहाँ पे, विच विल बी अनटेस्टेड टेक्नोलॉजीज. ओके, और अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ओके, द नेक्स्ट थिंग विच इट फोकसेस ऑन इज दैट the climate crisis is due to unequal contribution and that climate justice must underlie mitigation and adaptation. So again the report is talking about climate justice. तो यहाँ पे climate justice जो है इसका मतलब क्या हो गया? Climate justice का मतलब हो गया कि that the burden of developed country is more as compared to developing countries. Okay, so since developed countries they have more responsibility in contributing historically the carbon dioxide emission. So developed countries, ओके, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उनका शेयर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो दे मस्ट प्रोवाइड फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, टू डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ सम अदर इंफॉर्मेशन. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 27, ठीक है, तो 26 इट वाज हेल्ड एट ग्लासगो, 27 इट वाज हेल्ड इन इजिप्ट, और जो नेक्स्ट होने वाला है इट विल बी इन यूनाइटेड अरब एमिरात. नाउ कमिंग टू वेस्ट एशिया. ठीक है, सो वेस्ट एशिया इज करेंटली इन न्यूज़. ठीक है, नाउ व्हाई इट इज इन न्यूज़? बिकॉज रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि दैट चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेडिएटिंग टू रीस्टार्ट द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू आर्क राइवल्स. दीज आर सऊदी अरेबिया एंड ईरान. Okay, two important countries of West Asia. Now this we have to look this in the backdrop of deprioritizing West Asia. तो यूएसए ने क्या किया है कि जो अपना स्ट्रैटेजी है वेस्ट एशिया को लेके वो चेंज किया हुआ है. तो अगर आप देखेंगे कि जब से इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट जो है वो राइज हुआ है, दैट इज राइजिंग चाइनीज एसोसिएटिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन, we see the gradual withdrawal of USA from West Asia. Okay, so USA is gradually withdrawing from West Asia. ठीक है, तो ये जो वैक्यूम है वेस्ट एशिया का, अब इसको कौन फुलफिल कर रहा है? इसको फुलफिल कर रहा है चाइना, which is highlighted in the mediation which it held between Saudi Arabia and Iran to restart the diplomatic relationship which was stalled since 2016. Got it? नाउ इफ यू विल सी, जब आप जिम्मी कार्टर हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट, तब से जो यूएस की जो पॉलिसी है, ठीक है, तो तब से वो ये रहा है कि टू सी दैट सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस टुवर्ड्स द गल्फ एंड एंश्योर दैट द रीजन रिमेन एन एक्सक्लूसिव अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो हमेशा से ये कोशिश रहा है कि जो गल्फ में जो है इट रिमेन्स द अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. व्हाई? द सिंपल आंसर इज ऑयल. ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि अब अगर आप देखेंगे कि यूएसए इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, फर्स्ट थिंग. सेकंड,
USA has now other priorities, especially in Indo-Pacific region. Okay, so now what has happened that USA is slowly gradually withdrawing from West Asia, but USA ने ये इसको इस तरीके से नहीं किया. पहले USA ने क्या किया? USA during Barack Obama time, okay, they realized that US endless entanglements in the region were slowing down its attempt to address emerging conventional challenges. Hence, USA reached out to Iran and struck a multilateral deal of its nuclear program. Okay, तो यहाँ पे ओबामा प्लान क्या था? To reach a entente with Iran and persuade America's Arab allies and Tehran to share the region. ठीक, but the US cutting a deal with Tehran at a time when the US own actions had made Iran stronger angered both its Gulf allies and Israel. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि बराक ओबामा के टाइम में ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा, बट देन ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प टाइम यूएसए स्टॉप द डील. Fine, so it angered Iran as well as other allies of US in the region. तो यहाँ पे देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प व्हेन ही डिस्ट्रॉयड द न्यूक्लियर डील दे वेलकम्ड इट, उन्होंने वेलकम किया, बट मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट हैव एन अल्टरनेटिव टू चेक ईरान्स इमीडिएट कन्वेंशनल मिलिट्री पावर. So when Tehran responded to Mr. Trump's maximum pressure with maximum resistance, particularly targeting Saudi Arabia and UAE, the US looked away. So this is very important कि यूएस वहाँ से विड्रॉ तो हुआ, ठीक है, बट ईरान ने भी जो है वो मैक्सिमम रिटेलिएशन भी किया. ओके, मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखाया. इट स्टेप्ड अप इट्स अटैक इन सऊदी अरेबिया एंड यूएई व्हिच वर ट्रेडिशनल यूएस अलाइज. ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यूएसए ने एक और वहाँ पे चीज चली जिसको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड. अब्राहम अकॉर्ड, अभी अब्राहम अकॉर्ड क्या है जो 2020 में साइन हुआ था. So it was signed between, it was like normalization of ties between Arab countries and Israel. That is Abraham Accord. So if you will see the Abraham Accord, तो इसमें एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ यू हैव यूएई, बहरीन, मोरक्को and Sudan. So here it was starting the relationship between these Arab countries and Israel, and here USA का जो plan था वो ये था कि to create an anti-Iran alliance in West Asia, okay, which should include its ally Israel also. But later on, because of Israel's policy in West Bank, as you will see over here, ठीक है, so Israel's policy in the West Bank, it has acted as a dampener for other Arab countries to join this accord. So that's why they are now moving towards more other countries, okay, especially China. Now see, multi-pillar region. This is West Asia. So its allies, means US allies, they are trying to establish more predictable ties with friends and foes, creating their own spheres of influence and emerging as the new pillars of the region. जैसे कि Israel, it wants to strengthen its ties with the world, with the Arab world, to face down Iran without compromising on Palestine. ये Israel सोच रहा है उस region में. Then Iran, it wants to break out of the economic chokehold of sanctions and realize its true potential. Similarly, Turkey wants to swing back to a region which it once dominated, and Saudi Arabia wants to become the natural leader of the Arab world. अब यहाँ पे देखिए चाइना का क्या है. China, which is the new superpower on the block, wants to make sure that its economic interests are protected. इसका मतलब 1980s में जब US जो सोच रहा था वो China सोच रहा है, because US is now significant producer of crude oil, but China is not. But still, China, to fuel its economy, it needs crude oil, so it wants to protect its economic interest in that region. Okay. अब इन सब का मतलब क्या है कि क्या यूएस कंप्लीटली विड्रॉ हो चुका है वेस्ट एशिया से? द आंसर इज नो, because see, the US has several bases and tens of thousands of troops deployed across the region, and it will continue to play a major security role. But the Gulf, or the larger West Asia, is no longer an exclusive American sphere of influence. It says that USA has the role to play, but not an exclusive role. Now other countries have also entered the region. So see, there are three constraints. Okay, the first is America's declining ability to shape geopolitical outcomes in the West Asia, China's continued rise, and a growing appetite for US allies to make autonomous foreign policy choices. So this is new talent for America in West Asia. Okay, so now if you will see that USA जो है, it is not
completely withdrawn, but definitely इसका जो ability है to shape the geopolitical outcomes has declined. At the same time, it has witnessed the rise of China. And third is that now US allies, they are making their autonomous foreign policy choices. For example, let me give an example. When US President Joe Biden, he visited Saudi Arabia, and he wanted Saudi Arabia to take to be the part of Western sanctions against Russia. So Saudi Arabia declined that. Okay. Then later Saudi Arabia also declined to become the part of the Abraham Accord because of the Israel's policy in West Bank. Right. So let's see over here. यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छे से. The UAE not only agreed to normalize ties with Israel through the Abraham Accords, but also amended ties with Iran and warmed up to Syria and Turkey. तो एक नया अलाइनमेंट बन रहा है, बट उसी जगह पे सऊदी अरेबिया को देखिए. Saudi Arabia, on the other side, resisted embracing Israel. Instead, the kingdom, arguably the most powerful Arab country, saw an alternative for stability in the China-mediated peace plan with Iran. Then third is Israel, which is a linchpin of America's collectivization strategy, itself is resisting American influence. For example, Israel का जो new government है, it is moving ahead with its judicial overhaul plan despite pressure from Washington. Then Israel also refused to join the Western sanctions against Russia and refused to send weapons to Ukraine. Fine. So this is the new alignment which we are witnessing now in West Asia. The next is the Fed is a prisoner of its own mind. So यहाँ पे if you will see the Fed, that is Federal Reserve. So what is this Federal Reserve? So Federal Reserve, it is the central bank of यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक होता है. सो जस्ट लाइक मैनी अदर कंट्रीज विच आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट to control inflation, Federal Reserve is also increasing the interest rate to control inflation. But if you will see recently the failure of Silicon Valley Bank, ठीक है, तो one of the major reason for failure of Silicon Valley Bank was rise in benchmark interest rate. Rise in benchmark interest rate. राइज इन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट. ठीक है. नाउ हाउ द राइज इन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट. तो जैसे सिलिकॉन वैली बैंक है, ओके, तो इट इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया. सो इट हैज सफर्ड द फेलियर जस्ट बिकॉज कि इसने जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो किया था वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स में किया था फेडरल रिजर्व के, और जब इंटरेस्ट रेट हाइक होने लगा तो उसका जो वैल्यू है वो घटने लगा. ओके, फाइन. सो बिकॉज ऑफ दैट द सिलिकॉन वैली बैंक फेल्ड. Okay, the other banks which have failed in US is Signature Bank, जिसके मैक्सिमम जो कस्टमर थे, जिसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था वो क्रिप्टो करेंसी में था. So let's see. Yeah, the state promises to honor the deposits even if the banks cannot. Further, the banks could allay the fears of the depositors if they had either cash or short-term assets in significant amount. ठीक है, जैसे कोई भी बैंक है अगर उसके पास बहुत लोग पहुंच जाएं अपना डिपॉजिट वापस लेने के लिए, तो बैंक के पास जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट होना चाहिए. Okay, the bank should have short-term assets. But in the case of Silicon Valley Bank, इसने जो जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट था वो लॉन्ग टर्म एसेट में किया था. So it was not able to get that liquidity while the demand for withdrawal of deposits started increasing. So unfortunately for these banks, neither were of significant share of the deposits insured, nor did the banks hold near cash asset in adequate amount. Right? The next is bond yield. So see. When the Fed increases the interest rate, the returns for new assets of all maturities rise, but the old assets are still fetching the lower yield. So those holding the old assets lose value notionally. Okay, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो कि Fed ने अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, तो जो न्यू एसेट्स होते हैं, ठीक है ना, न्यू एसेट्स मतलब जो नए बॉन्ड्स हैं, उनका जो रिटर्न है वो इंक्रीज होता है, बट जो ओल्ड एसेट्स हैं, ओके, उनका यील्ड जो है वो अभी भी कम होता है. सो व्हाट हैपेंस, द यील्ड कर्व कैन इवन गेट इन्वर्टेड विद शॉर्टर टर्म एसेट्स गिवन हायर रिटर्न्स देन लॉन्गर वन, एज द केस इन द यूएस करेंटली. तो डिपॉजिटर्स के लिए क्या हुआ, दैट इट मेक्स सेंस टू मूव अवे फ्रॉम सच रिस्क रिडन डिपॉजिट्स विद वेरी लो यील्ड टुवर्ड शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री ट्रेजरीज. ओके, तो फाइन. तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री ट्रेजरीज होते हैं, इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनका डिमांड बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म का डिमांड ऑब्वियसली घट जाता है, तो डिमांड घट गया तो रिटर्न्स भी जनरेट करेगा. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन. ओके,
for the failure of Silicon Valley Bank. So that's why how it is connected with the rising benchmark interest rate. Means that's the way the Silicon Valley Bank has done their investment in the long-term bonds of the Federal Reserve or Treasury, and बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट उसका जो वैल्यू है वो घटते गया और शॉर्ट टर्म का बढ़ते गया. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट दे कुड नॉट ऑनर द डिपॉजिट डिमांड ऑफ देयर कस्टमर. The next is the protest in France over pension reforms. So France is witness a protest of the government's decision to change the state pension age from 62 to 64 years. मतलब now the person will be eligible to receive pension not from 62 years but from 64 years. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि फ्रांस में जितने भी पर्सन रिटायर होते हैं दे गेट अ स्टेट पेंशन. ओके. सो यहाँ पे होता है कि द गवर्नमेंट सेज दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन फ्रांस इज इंक्रीजिंग. ठीक है. तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रहा है तो पेंशन का जो टेन्योर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर के पे उतना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा. सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन इज दैट गवर्नमेंट इज नाउ इंक्रीजिंग द एलिजिबल एज फॉर रिसीविंग द पेंशन. नाउ पहले अगर 62 ईयर्स से ही पेंशन स्टार्ट हो रहा था, नाउ इट विल बी 64 ईयर्स. So the government says the measure to gradually raise the retirement age by 3 months every year till it reaches 64 by 2020 is indispensable. Why it is indispensable? In order to balance the pension system and keep it financially viable, ताकि गवर्नमेंट जो है वो पेंशन प्रोवाइड कर सके. अदरवाइज इतना ज़्यादा एक्सचेकर पे प्रेशर हो जाएगा कि they will not be able to give the pensions. Now see what the pension scheme says. The government has highlighted that the potential outcomes of the pension reform that new retirees will get a guaranteed minimum pension of not less than 85% of the total minimum wage. ठीक है. That is okay. That is about 1200 euros per month at current level. The second, the government plans to index the pension to inflation levels for those who receive minimum income a year after retirement. So it says that the pensions of the poorest 30% of the retirees will increase by 2.5%. Fine. But now why people are protesting? तो यहाँ पे देखिए जो फ्रांस में जो है दैट फ्रांस करेंटली हैज वन ऑफ द लोवेस्ट क्वालिफाइंग एजेस फॉर स्टेट पेंशन अमंग द बिग यूरोपियन कंपनीज. फाइन. जो फ्रेंच हैं दे चेरिश द रिटायरमेंट सिस्टम एज वेल एज नेशनल हेल्थ केयर as it is seen as hard earned, having been introduced by National Resistance Council after Second World War. तो यहाँ पे क्या है कि generations of workers for many decades they have accepted high mandatory taxes. मतलब वहाँ पे taxes बहुत ज़्यादा लगता है to fund the pension system. ऐसा क्यों? Because it creates guarantee of state-backed pension earning, that they are paying high taxes because they know that after retirement they will get good pension. So the new system means current workers will have to work longer to sustain pensions for the ballooning aged population. मतलब कि now 62 साल से पेंशन स्टार्ट हो रहा था, अब 64 साल से पेंशन स्टार्ट होगा, तो they have to work harder. Then reform will negatively affect blue collar workers who often start working young, have shorter life expectancies or have less optimum working conditions compared to white collar workers. तो अब आप जो वर्कर्स का जो टेन्योर है वो बढ़ा रहे हो, तो इसमें इम्पैक्ट किसको मिलेगा? blue collar workers को, because they would like to retire early, fine, but now they have to work more. The next is IPCC synthesis report, which we have discussed earlier, so we will just take extra important points from here. What is the way ahead? We will take it first. So it says that climate resilient development that will not only mitigate the effects of climate change but also provide wider benefits. The next is access to clean energy, improving air quality, increasing employment opportunities, boosting healthcare through technology, and delivering equity are among the report's recommended goals to help adapt to climate change. Then the report also foregrounded the role of financial investment to achieve climate goals, which I have discussed already. Okay, and it has encouraged public funding through central banks, government and financial regulators to reduce emissions, scale up climate resilience and protect marginalized communities. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सॉल्यूशंस हैं. ओके, दीज आर सॉल्यूशंस एंड डायरेक्ट सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ऑल्सो. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको देनी चाहिए? टू मिनिमाइज लॉस एंड डैमेज इन टर्म्स ऑफ लाइव्स, लाइवलीहुड एंड बायोडाइवर्सिटी and accelerate equitable action and adaptation. Fine. तो अब देखिएगा IPCC रिपोर्ट है वो ये क्या कह रही है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने कितना गोल रखा था अपने सामने, दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस, बट अभी की अगर हम बात करें तो इट इज 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी.
That's why they are calling for reducing the emission by 52% based on 2019 level by 2030. Now इंडिया के लिए क्या सॉल्यूशंस है? सो एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया कैन लोअर इट्स पर कैपिटा एमिशंस थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज लाइक इन एवरी सेक्टर. फाइन, एनर्जी एफिशिएंसी पे हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसीज हो गए, ऑल दोज थिंग्स वी कैन फोकस ऑन. देन द नेक्स्ट इज डीकार्बनाइजिंग द एनर्जी सेक्टर बाय यूजिंग solar and renewable energy. The next is government will attempt to open corridor to Sharda Pit in Pakistan occupied Kashmir for devotees. So it will be on the lines of Kartarpur corridor in Punjab. तो माँ शारदा देवी जी का टेम्पल है near the line of control in Jammu and Kashmir. So here our Union Home Minister Amit Shah has said that government will move forward to open a corridor to Sharda Pit in Pakistan occupied Kashmir on the lines of Kartarpur corridor. Now what is this Sharda Pit? So Sharda Pit जो है, it is a river site for Hindu community. It is located in Neelam Valley in POK across Titwal village along LOC in Kupwara. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो what is this Kartarpur corridor? So Kartarpur corridor जो है, it is a corridor from India to Pakistan and it links two important shrines, 6 shrines. These two important 6 shrines are Dera Baba Nanak, which is in India, it is in Gurdaspur district of Punjab, and Gurudwara Darbar Sahib, which is in Kartarpur, Pakistan. अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे the Sikh pilgrims, they can travel to both these shrines without visa. So it allows pilgrims to travel visa free. Fine. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि the same concept will be used for making enabling the pilgrims to travel to Sharda Pit. Padma Awards, ठीक है. So Padma Award, it were announced earlier. Now it has been awarded to former Karnataka Chief Minister S.M. Krishna, industrialist Kumar Mangalam Birla, and playback singer Suman Kalyanpur. They were among those who were honored with Padma Awards by President Draupadi Murmu. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखेंगे that noted, यहाँ पे बहुत important है, Padma Vibhushan, which is the second highest civilian award. Okay, it was awarded to S.M. Krishna. Then noted architect Bal Krishna Doshi. Okay, he was also awarded the Padma Vibhushan posthumously. Fine. Then Rakesh Jhunjhunwala, he was awarded Padma Shri again posthumously. Then Padma Bhushan, so Kumar Mangalam Birla, who is the chairman of Aditya Birla Group, he was given the Padma Bhushan. So Padma सबसे पहला जो टॉप सिविलियन अवार्ड होता है वो इंडिया का, दैट इज भारत रत्न, फॉलोड बाय पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. ओके, नाउ सी दिल्ली बेस्ड प्रोफेसर कपिल कपूर, Kamlesh D. Patel, Miss Kalyanpur, they were all those who were awarded Padma Bhushan, which is the country's third highest civilian award. Then coming to this, the president has approved 106 Padma awards on the eve of Republic Day. Okay, and over 54 people were given on Wednesday. 2 awardees, including music legend Zakir Hussain. Okay, he has been honored with Padma Vibhushan. They were not present at the ceremony. Now coming to exercise Cobra. So exercise Cobra Warrior, this exercise is going on in UK, where over the past 3 weeks 5 Indian Air Force Mirage 2000 aircraft have been taking joint training, which involves high intensity, large force and tactical air war fighting operations with 6 other Air Force as part of multilateral exercise Cobra Warrior. Okay, so other countries which are participating in this are UK, Finland, Sweden, South Africa, Saudi Arabia, US, Singapore. Then Finland, India and Saudi Arabia joined for the first time. Now coming to millets again. So Indian Army to reintroduce millets in rations of soldiers. So already 2023, the year 2023 has been declared as International Year of Millets. International Year of Millets, ठीक है. And so under this, now Indian Army is set to reintroduce millets flour in the rations of soldiers and has sought the Union government sanction to procure millets flour not exceeding 25% of the authorized entitlement of cereals. ठीक है, तो अब जो टोटल सीरियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ पहले व्हीट एंड राइस होती थी, अब उसमें मिलेट्स भी होगा. नेक्स्ट, SC2 हियर पेटिशन सीकिंग टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट देयर आर एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ IPC. ठीक है, उसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 2, विच डीक्रिमिनलाइजेस मैरिटल रेप.
How? It holds that sexual intercourse by a man with his own wife who is not under 18 and without her consent is not rape. ठीक है? So if the wife is not under 18, so sex without her consent will not be considered as a rape. So Supreme Court is going to hear this petition which seeks to criminalize marital rape. The next is US Federal Reserve lifts interest rate amid banking sector fears. So we have discussed that how the increase in benchmark interest rate was one of the reasons for failure of a Silicon Valley Bank. So here now US Federal Reserve has lifted interest rate amid banking sector fears. So it has raised its lending rate, to strike a balance between curbing high inflation and averting further upheaval in commercial banking sector. The next is from foreign page. Two news are important. First is China boosts South Pacific influence with Solomon's port deal. So Chinese company, they have won a contract to develop a key port in the Solomon Island, which is a major victory for Beijing to gain hold in South Pacific Ocean. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे that Solomon Island government, they have announced that China Civil Engineering Construction Corporation has been chosen to lead a $170 million project to develop the international port in capital Honiara. The next is US Argentine scholar wins Abel Prize for mathematics. So the Abel Prize for mathematics, it was awarded to Argentine American Luis Caffarelli, who is an expert in partial differential equations. Right? Now this award, it is awarded by the Norwegian Academy of Science and Letters. Normally Abel Prize को हम जो है Nobel in Mathematics भी कहते हैं. Then other awards which are related to mathematics is Fields Medal. Fields Medal. This is also an award given in mathematics. Then there is one more award called as Boltzmann Medal. Boltzmann Medal. So it is given for statistics. For Boltzmann Medal. Now from economy, number of foreign businesses exiting India surpasses new entrants. So यहाँ पे है that since 2018, more than 550 overseas firms ceased operation in India, and 470 countries have set up the business over the same period. Then the reasons for is that COVID-19 global economic slowdown. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.